Good morning. Welcome to Vanik Smart Classes. आज आम डिस्कसन करवा some important questions related to OSSC CGL computer MCQ. First question thila, the software tools that enable a user to interact with a computer for specific purpose are called dash. The software tool that enables user to interact with computer for a specific purpose are called as. Specific purpose means हार्डवेयर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर ना एप्लिकेशन. तो ये तो आम सॉफ्टवेयर दी प्रकार मात्र अच्छी गोटे जनरल पर्पज एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर आउटला स्पेसिफिक पर्पज एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर. तो ये आम कौन आंसर करवा निहाती आम एप्लिकेशंस करवा कहीं द सॉफ्टवेयर दैट एनाबल्स यूजर टू इंटरैक्ट विथ द स्पेसिफिक पर्पज कहले आम सॉफ्टवेयर कौन कहवा ना एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर ही कही था. द सॉफ्टवेयर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर गोटे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर. देख सिस्टम सॉफ्टवेयर डील्स विथ ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लिकेशन डील्स विथ स्पेसिफिक पर्पस, से आंसर करवा एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर. It does share hardware, software and data among authorized user. It does share hardware, software, data among authorized user, network protocol, hyperlink na transmitter. Share kariba hardware, software and data among the authorized user. User answer it kariya network. काहे कि network करिवा ना network is the interconnection of autonomous computer. It is only used for sharing internal resources as well as hardware devices of internal resources as well as hardware devices of computer system. Internal resources as well as hardware devices of computer system. सेथिपाई शेयर अच्छी हार्डवेयर अच्छी सॉफ्टवेयर एंड डेटा हम ऑथराइज यूजर आंसर करले नेटवर्क. Next question, computer program are written in high level language programming. However, the human readable version of a program is known as dash. Computer programs are written in high level language. Generally, softwares are written in high level language. However, the human readable version of a program is known as dash. Human versable of a program is known as source code. Our alternative questions पढ़े handwritten program. Handwritten program is also known as dash. Handwritten program is also known as dash. Now, handwritten program is also known as source code. Source code is a human writable program. सेथिपाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम इज नोन एज सोर्स कोड. Next question, in word processing an efficient way to move the third paragraph to place it after the fifth paragraph.
टू मूव द प्रोग्राम ये मूव अच्छी माने मूव ऑप्शन अच्छे माने कॉपी तो हेनी कॉपी कट पेस्ट भी हेनी कट कॉपी पेस्ट हेनी तो आंसर कौन हम ना कट पेस्ट तार शॉर्टकट तुम यूज कर पार कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल V और अल्टरनेटिव क्वेश्चन आसे what is the best way to move a folder from one place to another? What is the best way to move a folder from one place to another? It is answer करिवो cut and paste और जदि यार शॉर्टकट थी कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल भी तुम्हें यूज करी पारिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट आदर कंट्रोल यूनिट कोडा फंक्शन नुहे कंट्रोल यूनिट कौन न सीपीयू consists of three parts ALU, CU and MU. Arithmetic, logic unit, CU stands for control unit, MU stands for memory unit. ALU understand only 0 and 1. CLU controls coding and decoding part. Coding and decoding part. So coding and decoding part means read instruction is just true. Execute instruction is also true. Interpret is also true, but direct operation is not possible by control unit. Direct operation is not possible by control unit. Control unit किसी करी पारिबनी काम के करना arithmetic, logical unit. तो which of the following is not a function of control? Answer करिबा direct operation. Direct operation is not handled by जो CU control unit. Next question देखो software for organizing storage and retrieval of information. Software of organizing storage and retrieval of information. यदि हमें फर्स्ट जीवा ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम करना इट इज द बेस ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम. It is the base of any computer system where it runs application program. That means responsible for only to run applications program. Database कौन ना database है it is an organized collection of interrelated, interdependent entities in a tabular form so that fetching, updating, altering and manipulating data in database easily. एगुड़ा इजिली हैंडल करि पारुथिबारु आकु डाटाबेस प्रोग्राम कहा जाए सॉरी डाटाबेस कहा जाए. डाटाबेस प्रोग्राम मीन्स कौन ना डाटाबेस प्रोग्राम मीन्स इट्स ए प्रोग्राम used in database
for storing, retrieving, altering, updating and manipulating data in database. डाटा इन डाटाबेस ये सब जाक हैंडल कर तो डाटा वेयर हाउस कौन ना इट इज द कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज द कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज द कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग database the collections of information regarding about database तो से आंसर कौन करिया ना जहाँ साहाଯ୍य आम रिट्राइव करें ये ऑप्शन अच्छी स्टोरेज आउ कौन अच्छी रिट्राइवल इनफॉरमेशन से आंसर करवा डाटाबेस प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी इज सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर अकम्प्लिश ए टास्क इज नोन एज डैश स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप माने सॉरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर set of step by step procedure for accomplishing a task is known as dash एटी कौन अच्छी ना step by step procedure लक्ष्य करिवो ना step by step procedure अच्छी देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फास्ट लिखो अल्गोरिथम अल्गोरिथम लॉजिक कौन कौन ना इट्स से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर तार तार सिंटैक्स ले स्टेप 1 ने कौन हो सॉल्यूशन स्टेप 2 रे कौन यूज करछे स्टेप 3 रे कौन यूज करछे अप टू स्टेप एंड जाके जीव तेणु आंसर करबा अल्गोरिथम तो अल्गोरिथम है इट्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अकम्प्लिश टास्क नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट राम राम माने कौन है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM is a temporary storage area प्रथम ऑप्शन अच्छी RAM is a temporary storage area एटा ट्रू ना फॉल्स ना RAM को आज volatile in nature volatile in nature volatile means when the power is failure data will be lost यदि पावर फेल्योर है डाटा विल बी लॉस्ट तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ट्रू अच्छी RAM इज ए टेम्पररी नेचर ट्रू अच्छी RAM इज द सेम आज हार्ड डिस्क स्टोरेज RAM इज वोलाटाइल ये भी ट्रू अच्छी इनफॉरमेशन स्टोर्ड इन RAM इज गॉन व्हेन ये टर्न ऑफ तो आंसर ये कौन करबा ना देख तीन टाक ट्रू अच्छी क्वेश्चन पचार व्हिच वन इज नॉट ता माने जोटा फॉल्स एटा लिखिबा देखो RAM is the same as hard disk storage. Hard disk storage is permanent, but RAM is temporary. से पे आंसर ये कौन करें ना which one is not true about RAM that is RAM is the same as hard disk storage is the false in this question. The answer is कौन करें मैं RAM is same as hard disk space. Next question thila main directory of a particular disk drive or named of the directory of a disk is called a dash. Directory means what? Now directory directory कहाँ को कहा जाए ना in case of Windows operating system यदि आमे Windows operating system लेवा जोटा आमे फोल्डर कहूचे DOS रे ताको कहा जाए डायरेक्टरी DOS रे सिंबल तुम जानछ C:// एटा होची DOS रो सिंबल तो DOS रो
এইটা কুয়া যায় रूट डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी क्वेश्चन था द मेन डायरेक्टरी ऑफ ए पर्टिकुलर डिस्क डिस्क किए कंटेन करछि ना डिस्क जेतु सी रो गोटे ड्राइव ड्राइव रो डिस्क को किए कंटेन करे ना रूट डायरेक्टरी सेति पय एठी आंसर करियो द मेन डायरेक्टरी ऑफ ए पर्टिकुलर डिस्क इज कॉल्ड रूट डायरेक्टरी आंसर हैला रूट डायरेक्टरी the physical arrangement of elements on a page is referred to as documents dash the physical arrangement of element on a page is referred as dash जदि आमे पेज को physically arrangement कले ताको आमे कोन कहबा देखो प्रथम होजी फीचर्स सेकंड हैला फॉर्मेट थर्ड हैला पेजिंगनेशन फोर्थ हैला ग्रिड एक्चुअली ये कोन ना फिजिकल पेज अरेंजमेंट देछि पेज माने कौन ना मार्जिन सेटअप करिवो ओरिएंटेशन सेट करिवो तो सेति भाई के ना पेजिंग नेशन इज पॉसिबल तो पेजिंग नेशन साहाଯ୍य रे बा पेज सेटअप ऑप्शन साहाଯ୍य रे पेज सेटअप ऑप्शन साहाଯ୍य रे आमे कोन करियो ना मार्जिन सेट करिया मार्जिनल लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेट करि परिबा हेडर एंड फुटर रो पोजीशन सेट करि परिबा गटर पोजीशन भी दे परिबा ओरिएंटेशन भी सेट करि परिबा तो सेति पाए फिजिकल अरेंजमेंट करिया पय हमें पेजिंगनेशन यूज करते हियर द राइट आंसर इज पेजिंगनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो equal to sum b1 is to b8 is an example of a dash एटा obviously कोट वास्ते क्वेश्चन है एक्सेल लो equal to sum b1 is to b8 then b1 is to माने b1 उ b10 जाके मिसेब ताको एक्चुअली कोन कहा जाए ना फर्स्ट देखो अछि फंक्शन सेकंड फार्मूला थर्ड हैला सेल वैल्यू फोर्थ वन वैल्यू तो ये आम कहना b1 is to b8 फंक्शन तो कहि परिबानी जेतु इक्वल साइन लागी आम फंक्शन कहि परिबा नाही जदि आम इक्वल टू जनरल लिखा है तो सम इट्स ए फंक्शन abs इट्स ए फंक्शन जेतु तुम स्टार्टिंग रे इक्वल टू लगे देछ तो एटा को कोन डायरेक्टली आम कोन कहना इट्स ए फार्मूला तो इक्वल टू सम b1 b2 इज एन एग्जांपल ऑफ ए फार्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which of the following storage media provide sequentially only access माने आमर कहि ना एक्सेस अनुसार बा स्टोरेज को एक्सेस अनुसार आमे तीन बार व्यक्त करिचे एक्सेस और प्रॉपर्टी ऑफ स्टोरेज को आमे तीन बार व्यक्त करिचे गोटे सिक्वेंशियल राइट सिक्वेंशियल एक्सेस गोटे ला सिक्वेंशियल राइट रैंडमली एक्सेस आउटला रैंडमली राइट रैंडमली एक्सेस सिक्वेंशियल राइट सिक्वेंशियल एक्सेस मीन्स तुम्हें जेमती लोड करिथिबो जेमिति एक्सेस को सेही भला तुम एक्सेस करि पारियो सेति में एटी तीन प्रकार डिस्क अछि गोटे जी फ्लॉपी डिस्क होची ना रैंडमली राइट रैंडमली एक्सेस करि पारियो एटा हबनी तो मैग्नेटिक डिस्क भी सेम ओठी अछि मैग्नेटिक टेप अर्ली स्टेज बहुत पुराना रू आमे जो डिस्क गुड़ा यूज करूथिले एई भला जिनस गुड़ा थिबो एमती रील स्टेप्स गुड़ा तो रील स्टेप्स यदि आमे डायरेक्ट का को एक्सेस करा केले हमको एमती कवर करके जी आमे एक्सेस करिया को पडुथिला सेति पय आंसर हैला मैग्नेटिक टेप आके भी आल्सो कॉल्ड जा रील टेप आर एग्जांपल देखि पारे तुमे वॉकमैन ने आमे यूज करूथिले टेप रिकॉर्डर रे यूज करथले टेप रिकॉर्डर मशीन ने आमे कैसेट पकई जोड़ा यूज करथले सेडाला सीक्वेंशियल स्टोर सीक्वेंशियल एक्सेस सेति पे एटी आंसर करबा मैग्नेटिक टेप इज ए स्टोरेज मीडिया व्हिच प्रोवाइड्स सीक्वेंशियल एक्सेस ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कंपाइलर एंड ट्रांसमीटर आर आल्सो वन फॉर्म ऑफ डैश कंपाइलर and translator देखो compiler and translate both translators are used in
हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज आम दुईटा ट्रांसलेटर यूज कर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर कंपाइलर ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एट ए टाइम व्हेयर इंटरप्रेटर ट्रांसलेट लाइन वाइज तो दुईटा ट्रांसलेटर कंपाइलर और ट्रांसलेटर आम यूज करता को केस रे सेटा देख सी पचार एक्चुअली जे कंपाइलर ट्रांसलेटर आर वन फॉर्म ऑफ डैश तो जेहेतु आम हाई लेवल ट्रांसलेटर यूज कर दैट्स ए प्रोग्राम जदि ये प्रोग्राम ऑप्शन ना ताल सॉफ्टवेयर थी देखिए तुम्हें चूज कर प्रोग्राम थिला भी लिखता सॉफ्टवेयर थिले भी लिखता तो ये कौन अच्छी ना सॉफ्टवेयर तो आंसर कौन करा सॉफ्टवेयर कंपाइलर एंड ट्रांसलेटर आर वन फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर data representation is based on the number system which was two numbers and represent all data data represent is based on the dash number system data represent on the dash number system माने आज computer is an electronic machine आज computer is an electronic machine so it only known two state आज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन सो इट ओनली नोन टू स्टेट को स्टेट ना गोटे ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट बाय 0 आ गोटे ऑन स्टेट रिप्रेजेंट बाय 1 तो कंप्यूटर ओनली नोन 0 एंड 1 दैट इज बाइनरी लैंग्वेज तो एवरीथिंग शुड रिटेन इन बाइनरी लैंग्वेज नेले कंप्यूटर सेटा बुझी पारियो तो सेठी पाई डाटा रिप्रेजेंट इन बेस द डैश नंबर सिस्टम आंसर कौन करिया ना बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 0 एंड 1 सेठी पाई आंसर कले बाइनरी नंबर सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस आर डैश आधुर कॉमन इनपुट डिवाइस के कॉमन और बेसिकली कहा जाए स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस तो आ भर स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के देखा मॉनिटर आउटपुट डिवाइस एटा इनपुट डिवाइस एटा हेनी सेकेंड है मॉनिटर मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस माउस है इनपुट डिवाइस एटा भी हेनी नेक्स्ट है माउस एंड कीबोर्ड ये भी इनपुट डिवाइस ये भी इनपुट डिवाइस और प्रिंटर माउस ये आउटपुट डिवाइस है इनपुट डिवाइस तेणु गोटे रहा कौन दीटा इनपुट डिवाइस के द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस आर कॉल्ड माउस एंड कीबोर्ड तो माउस एंड कीबोर्ड को ऑल्सो इज नोन एज स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहा जाए नेक्स्ट तेणु आंसर करिया आमे माउस एंड कीबोर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है www मीन्स कौन ना डबल ट्रांसफर वर्ल्ड वाइड वेब को लिखा देखो वर्ल्ड वाइड वेब सी इज द राइट आंसर वर्ल्ड वाइड वेब आपको के डेवलप करना टिम बर्नर्स ली ऑन मार्च 1989 तो डबल मीन्स टिम बर्नर ली बेले क्वेश्चन आसे डब्ल्यू फोर्थ W stands for ए जगह फोर्थ W करिबो ओर्म आ बेले आसले W3C C stands for कंसोर्टियम हैला नेक्स्ट क्वेश्चन आसे वर्ल्ड वाइड इज मेड ऑफ डैश ना इट इज मेड of HTML computer language. It is made of HTML computer language. ये जो डब्ल्यू मिनिमम 3-4 क्वेश्चन आसे सब जगह कही रिलेटेड जी जदि ट्रिपल डबल पढ़ो वर्ल्ड वाइड वेब जदि फोर्थ जदि 4टा W पढ़ो 4W stands for वेब W3C पहला C stands for कंसोर्टियम तो ये डबल खाली मीन्स पचारि से आंसर करो वर्ल्ड वाइड वेब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी dash processing is used when a large mail order company accumulates order and process them together in a large set
आदर कौन dash processing is to when a large mail order company आम एक्चुअली कौन करथाओ आको कहुए बैच कौन ना बैच प्रोसेसिंग सिस्टम बैच कौन आम गोटे थाए बैच फाइल ऑर्डिनरी फाइल और बैच फाइल भितर डिफरेंस होचे बैच फाइल कौन ना इट विल रन more than one executable file. It is used to run more than one executable file at a time. More than one executable file at a time. At a time बहुत गुड़े फाइल को रन करि पारिबो सेति लिखा है dash is a processing used to when large mail order company accumulates order and passes through them together in a large one set से आंसर करो बैच फाइल एटी अच्छे कौन ना बैच तो आंसर करो बैच फाइल नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CD ROM एंड CD RW देखो CD ROM stands for compact disk read only memory in this device you can only read that data. RW means rewritable. RW means rewritable. Question देखो option देखो they are the same just two different terms used by different manufacturing they are not same गोटे जगह rewritable गोटे जगह only read ये दीटा समान नुहे तेणु फास्ट ऑप्शन करिबो नाही सेकंड ऑप्शन दे CD-ROM कैन बी रिटेन टू एंड CD-RW cannot एटा मैंने CD रिटेन टू एटा भी फॉल्स स्टेटमेंट एंड CD-RW cannot ये भी फॉल्स स्टेटमेंट CD-RW कैन बी रिटेन टू बट CD-ROM कैन बी रीड फ्रॉम ठीक अच्छे यहाँ कारण CD-RW आम राइट कर रीराइट कर आउ CD-ROM कैन ओनली बी रीड फ्रॉम बोथ आर ट्रू से आंसर करले सी द डिफरेंस बिटवीन CD-ROM एंड CD-RW थर्ड नंबर आंसर करवा आम CD-RW कैन बी रिटेन टू बट CD-ROM ओनली बी रीड फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन होल्डिंग द माउस बटन डाउन व्हाइल मूविंग एन ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट इज नोन एज डैश जदि आम गोटे ऑब्जेक्ट को माउस रो लेफ्ट क्लिक रे होल्ड करके आगो को नबा ता कहबा ड्रैगिंग आंसर है ड्रैगिंग A dash is a collection of data that is stored electronically as a series of records in a table. Dash is a collection of data that is stored electronically as a series of records in a table. देखो ये कौन आसला ना टेबल फॉर्म आसला तो टेबल फॉर्म आसे माने आम डायरेक्टली कोड जाना डाटाबेस को डाटाबेस रो डेफिनेशन सी भी सेया इट इज द कलेक्शंस ऑफ collections of table question भी सेया थिला जे series record in a table here is the right answer is database कारण टेबल फीचर्स केवल कोथरे आसे ना database फीचर आसे जेहेतु series of record अछि तो टेबल एला कोन ना टेबल it consists of fields and records जेहेतु field और record both रोची कोथरे ना database रे तो आंसर करवाठी database Next question. The primarily takes care of behind the skin detail manages the hardware. आपको कौन को आ जाए? Actually कौन करें ना the dash primarily take care of behind the skin details manage the hardware system. Actually hardware को किए manage करूँची तो internal hardware को किए manage करचे ना operating system. ये तीनटा कहीं हबने आगे check कर दियो ना application software माने हला it is the base operating application na it's a specific purpose
एप्लिकेशन को कह जाए स्पेसिफिक पर्पस जो आम यूज कर पेरिफेराल डिवाइस है द डिवाइसेस आर सराउंडेड बाय द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज पेरिफेराल डिवाइस हार्ड डिस्क वाला स्टोरेज कंटेनर खाली स्टोर करिवो से किसी मैनेज करि परिबो नै आ गोटे ऑप्शन हैला जे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इट मैनेजेस ऑल द डिटेल्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नेक्स्ट क्वेश्चन A dash is a professional design empty document that can be adapted to the user's need. आ माने देखो फर्स्ट ला ऑप्शन अछि फाइल फाइल एला इट्स ए कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन इट्स ए कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एज ए यूनिट तो आदरे कोन ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कले गोटे यूनिट रे स्टोर कले ता कहले फाइल ये एमटी नुह तुम्हें जहाँ स्टोर करिवो सेठी रहिबो गाइड माने तो गाइड का कहा जाए ना जदि गाइड कहा जाए और कहा जाए यूजर मैनुअल मीन्स एप्लिकेशन तैयारी हला एप्लिकेशन केमिति चलियो ता पे गोटे मैनुअल तैयारी करे ता कहते यूजर गाइड बा यूजर मैनुअल तो यूजर गाइड हेबन कि मैनुअल भी हेबन कि एटा हेबनी और रहिला कोन टेम्पलेट आंसर करिबो टेम्पलेट एंड इज ए प्रोफेशनली डिजाइन एम्प्टी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अडैप्टेड टू द यूजर्स नीड करया पे हमरे टेम्पलेट फाइल बनै थाओ से टेम्पलेट फाइल साहाय्य जो प्रकार टेम्पलेट यूज करो से वाला टेम्पलेट चलिबो तेणु आंसर है टेम्पलेट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड डैश ना इटा यूनिट ऑफ मेमोरी क्वेश्चन टा यूनिट ऑफ मेमोरी ए ग्रुप ऑफ 8 bit is called dash means 1 byte is equal to 8 bit तेणु आंसर कौन करबा ना ग्रुप ऑफ 8 bit is called byte आंसर है byte next question a hardware device commonly referred to as brain of computer system brain of computer system is known as कहा कहा जाए ना सीपीयू को आउ कौन कौन कहा जाए लिख आज हार्डवेयर बेसिस सीपीयू is called brain, heart, tower and backbone of any computer system ताने सीपीयू को आउ कौन कहा जाए खाली ब्रेन कहा जाए नहीं हार्ट भी कहा जाए टावर कहा जाए बैकबोन भी कहा जाए किंतु आदर गोटे खाली एक्स्ट्रा आम कही परिया आज ए सॉफ्टवेयर बेसिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम तेणु सीपीयू को आम कौन कौन कही परिया ना ब्रेन कही परिया हार्ट कही परिया टावर एंड बैकबोन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम तो ओनली खाली देछि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से आंसर कले सीपीयू व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड ए रो ऑन ए वर्कशीट जिते आम फीचर्स को जीवा एटा एक्सेल रिलेटेड क्वेश्चंस टा एक्सेल जो फीचर्स को आम जीवा द रो एंड कॉलम को जे इंटरसेक्ट करे रो एंड कॉलम जे इंटरसेक्ट करे ताको एई पोर्शन को आ जाए एई पोर्शन को कौन को आ जाए ना को आ जाए सेल तो आंसर एटी कौन करबा ना सेल व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन ए स्प्रेडशीट कॉल्ड सेल dash are often delivered pc through an email attachment and are often designed to harm आ भितरु कि हमको हार्म कराए ऑप्शन रही भाइरस स्पाम पोर्टल ना ईमेल मैसेज आ भितर किया हार्म करे ना एक्चुअली स्पाम पोर्टल्स और ईमेल ए तीनटा किसी हार्म करती नहीं किंतु गोटे हार्म करे से है भाइरस कहीं भाइरस हार्म करे तार डेफिनेशन भी से कहूँ इट्स ए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम
replicate itself without user knowing damage is being done in computer system. Damage is being done in computer system. तामने भाइरस हूँ एमती गोटे ता ना भी से फुल फॉर्म भी से वाइटल इनफॉरमेशन इश्यूज अंडर सीज तो से आंसर कौन करवा ना भाइरस दैट्स आर ऑफन डेलिवर्ड टू पीसी एन ईमेल अटैचमेंट एंड ऑफन डिजाइन टू हार्म मन रखता ना क्वेश्चन पड़े मोस्ट ऑफ द viruses are spreaded through dash maximum virus कोउथरे स्प्रेड करे आंसर करिवो सेठी को आंसर करिवो ना by opening an email जदि तुमे ईमेल बारंबार खोलुचो तले भाइरस 100% तुम सिस्टम रे इंटर करिवो नेक्स्ट क्वेश्चन हला What is the storage area of an email message? Email message रो storage area को कौन कहा जाए? फोल्डर कहबा, डायरेक्टरी कहबा, मेलबॉक्स कहबा ना हार्ड डिस्क कहबा? देखो फोल्डर, डायरेक्टरी, हार्ड डिस्क ये तीनटा होची सिस्टम रो कहार ना सिस्टम रो बाकी कौन रहिला मेलबॉक्स तो आंसर कौन करबा ना मेलबॉक्स. What is the storage area of an email is also called as mailbox. नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्कटॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज डेस्कटॉप कंप्यूटर हमें कौन कहबा ना पीसी कहि परिया पर्सनल कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज डेस्कटॉप कंप्यूटर. When a file contains instruction that can be carried by the computer is often called a dash. When a file contains instruction that can be carried out by the computer is also often referred as dash. देखो contain instruction प्रथम ऑप्शन डाटा केबे कहि परिबा नाही कारण डाटा ला रॉ फैक्ट एटी लिखा है ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन तो इनफॉरमेशन कहि परिबा ना काहे ना इंस्ट्रक्शन है द कलेक्शंस ऑफ इनफॉरमेशन एटा कहि परिबा आ दुईटा ऑप्शन होइला गोटे एग्जीक्यूटिव फाइल आ एप्लीकेशंस फाइल carried out by the computer is also called as आकु कहंती executable file. Documents converted to dash can be published to the web. Document कोठी की कन्वर्ट हेले आमे वेब रे पब्लिश कर पारा. वेब जानछ एबे मु कहली वेब कोन ना इट इज मेड ऑफ HTML कंप्यूटर लैंग्वेज. डेफिनेशन तैयारी हला कोन ना इट इज मेड ऑफ HTML कंप्यूटर लैंग्वेज ता माने डॉक्यूमेंट को हमें कहा सारी ट्रांसफर कले सी कोटे देखे पारे ना वेब रे शो करबा तो राइट आंसर कोन करे ना HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो जदि आमे HTML को ट्रांसफर करिया डॉक्यूमेंट टाकू ताले आमे वेब रे ताकू देखि पारिबा पब्लिश करि पारिबा. हियर इज द राइट आंसर इज HTML. थैंक यू.